A very good evening to all. My name is Alvina Hashmi. In the previous video, I have explained you about the Victorian era, that what were the impact of the Victorian era. Now in today's video, we will know about the modern era, or you can call it the modern age. It starts from 1901 to 1945 AD. This was the period when the country witnessed two world war. So you might be think what will be the condition of the society at that time. In the first video, I told you that literature and society, it is interrelated with each other. Whatever happen in the society, it create an impact on the literary work. So when the world is facing two world war, so what will be the mindset of the writers at that time? अगर आपकी कंट्री में वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो क्या उस टाइम लोगों का माइंडसेट होगा? फॉर एग्जाम्पल, in the past 2 years we have been suffering from COVID-19 situation. So all the people of the country get disturbed with this pandemic. Nobody is able to concentrate on anything. So when the world is witnessing two world war, you might be thinking, you might just make a guess what will be the situation at that time. It create a disturbing impact on the mind of the people, whether it's the common people or the writers. They used to write that type of work which tell us about what is the condition of the society. अगर उस टाइम पे कोई भी राइटर्स, जो भी राइटिंग्स हमारे आई, बहुत से राइटर्स ने वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है कि सोसाइटी की कंडीशन अच्छी नहीं है, लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया है. क्यों हो गया? क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है. सो दिस मॉडर्न एज फेस two world war which disturb the whole country. So that's why the writings, the poetry work which emerged during this particular period was based on the war. ज़्यादातर जो राइटिंग इस पीरियड में आई वो वॉर से रिलेटेड आई, बिकॉज उस टाइम ये सिनेरियो चल रहा था. ऐसी सोसाइटी की कंडीशन थी कि लोगों का माइंडसेट सिर्फ उसी के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गया था. जैसे कि आपकी पिछले 2 साल से कोविड-19 की सिचुएशन आई है, तो लोगों का क्या एक माइंडसेट, एक डर बैठ गया था. जैसे उस टाइम कोविड-19 की सिचुएशन से लोगों के दिल में एक डर पैदा हो गया था, ठीक इसी तरह 1901 से 1945 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसने लोगों के अंदर एक डर क्रिएट कर दिया था. पीपल वर fearful because of the condition of the war. So particularly the main point of this modern era is the country has witnessed two world war. So you should keep in mind that modern age starts from 1901 to 1945, and in this particular period the world witnessed the two world war. We will discuss other aspect of the modern age in my next video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the latest update. Thank you.